I'm getting some voice from the background. Please mute yourself. Okay. Now. Now you all are able to connect the different components of a computer to your CPU cabinet. Whether it is a front panel port or a back panel port, right? Yes. We have discussed about all ports of front panel and back panel. Okay. Sir, all back panel port not discussed, sir. Like LAN port, then after we have discussed about this expansion slot. No. No, sir. No, expansion slot are not discussed. Okay, fine. And look, this is the expansion slot. Actually, in this picture, this is the cover of expansion slot. ये expansion slot का cover है. Okay. But where is expansion slot? Actually, expansion slot is available at the motherboard. I'm just going to show you the expansion slot of motherboard. See, this is the picture of expansion slot. It is available at the motherboard. I'm just going to show you the full picture of motherboard. Fine. PCI slot, PCI 1, 2, 3. 3 slots are available at the motherboard. When we have to connect some extra cards, which type of card? For example, sound card, VGA card, LAN card, wireless LAN card, graphics card. So we connect these different types of cards with these expansion slots. हम इस expansion slot के साथ वो अलग-अलग तरीके के cards को connect करते हैं. And every card has an output port, means output. So from which part of our CPU cabinet we can get that output port? So we can get that output port from after removing removing this cover. In some cabinets, this cover is just connected with at few points. So we have to just press it and turn it. Then after we can remove it. In some CPU cabinets, it can be removed by just using a screwdriver. Fine. Suppose we have connected one LAN card with this PCI slot. Fine. The internal part of the LAN card will be connected at this slot, but the external part, we can see the external part from this part. Fine. Yes, sir. We need different cards as per our requirement. Suppose that we need 2 NIC cards at our PC. In that case, only one default NIC port, LAN port or Ethernet port is available at the motherboard. To get one more port,
at our CPU cabinet, we have to connect LAN card with PCI slot. So commonly we say that PCI slot is used as an expansion slot by which we can connect different types of cards. One more example I'm just going to give you. Suppose that this VGA port is now not working. Then what will we do? We will just buy a VGA card from the market. We will connect that VGA card with PCI slot, and this VGA port will be available from this panel after removing this panel. Yes, sir. इस पैनल को रिमूव करके उसका पोर्ट हमें मिल जाएगा. So it is very important. In the beginning, we don't have this kind of cards or anything, or simply say no requirement. But gradually, as our knowledge increases and we use our PC for multiple purposes, in that case, we attach different types of cards. Okay. Now, this is the use of expansion slot. Expansion slot, PCI slot. And now, this point is clear to everyone? Yes, sir. No, sir. Yes, sir. No, sir. Sir, Yes. means expansion slot Yes, is sir. known as PCI slot. Expansion slot is known as PCI slot. Okay. And this It means, PCI, sir, this sir, PCI, it- listen. This PCI slot is also known as PCI Express, because now in these days at motherboard, the size of this PCI slot is very small, and that slot is known as PCI Express, PCI small e. Okay. Yes. okay, sir. Excuse me, sir. Yes. Sir, please mixing of Hindi in between the explain. Missing between the explain means you were not present in the meeting, or there is a network issue. No, sir. Sir. I want to do not understand 100% in English. Sir, he Please. said that you can explain in Hindi, sir. Fine. I am explaining in Hindi also. मैं हिंदी में भी explain कर रहा हूँ और English में भी. ठीक है? And look, my dear friend, we are just trying to create an environment. हम ऐसा environment create करना चाह रहे हैं in which you try to learn English, how to speak in English, how to respond in English. तो इसीलिए हमारी क्लास जो मेरी क्लास जो है वो मिक्स चल रही है. मैं ट्राई कर रहा हूँ थोड़ी इंग्लिश थोड़ी हिंदी, इवन की जो इंग्लिश में बातें बोल रहा हूँ उसको हिंदी में भी इन शॉर्ट एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ. ठीक है? तो ग्रेजुअली यू विल हैव कैपेबिलिटी. ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे आपके पास में वो कैपेबिलिटी होगी कि आप मेरी बातों को समझेंगे भी, और थोड़ा थोड़ा जब रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करेंगे तो यू विल हैव गुड कैपेबिलिटी टू रिस्पॉन्ड ऑल्सो. Understand, Mukesh? Yes, sir. It is perfect, but I do not 100% understand of English. So please. Good. You are not 100% perfect, but you are trying well. Yes, sir. Because आप जो बोलना चाह रहे हैं आपने बोल दिया, और मैं ही नहीं, आपके क्लास के जितने बच्चे हैं वो सारे समझ भी गए कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं. Yes. तो कम्युनिकेशन का मतलब तो बच्चे यही होता है ना कि अगले को समझा देना. Yes, sir. अब मुझे ही कोई अगर ले जा करके उधर रख दे किसी इंग्लिश कंट्री में, तो उधर मेरी बात भी वैसे ही लोग समझेंगे जैसे अभी मैं आपकी बात समझ रहा हूँ या बाकी बच्चे समझ रहे हैं. मैं भी आपके भी लेवल से डाउन हो जाऊंगा. मैं अपनी बातों को 4 बार बोलूंगा तो शायद अगला 1 बार रिस्पॉन्ड करेगा, है ना. लेकिन वही अगर 2, 4, 6 महीने रह जाऊं तो हो सकता है उनसे बेहतर बोल दूंगा. Yes, sir. फिर मैं इतना सही से बोलूंगा कि वो बोलेगा पार्डन.
It is depend on environment. Yes, it depends on environment. अच्छा तो Right? बोलता है It depends Yeah. on environment. You have good capacity, Mukesh. Yes. Because you know how to express yourself. थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, ब्रशअप की जरूरत है ना? Yes, ओके, yes. गुड. तो इस एक्सपेंशन स्लॉट का इस्तेमाल हम लोग डिफरेंट कार्ड्स को लगाने के लिए करते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट, अपनी जरूरत के हिसाब से. ठीक है सर यस यस अमित. सर जो बोल रहे हैं कि जो पीसीआई स्लॉट है वो तो सर लैपटॉप में भी ग्राफिक्स वगैरह कार्ड लगाने के लिए दिया रहता होगा सर. हाँ दिया रहता है कुछ एक्स्ट्रा कार्ड के लिए, इंटरनल कार्ड के लिए. उसमें एक्सटर्नल के लिए नहीं होता है, इंटरनल के लिए होता है. इंटरनल कार्ड के लिए सर. हाँ ओके सर. इंटरनल अगर आप कुछ लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं. ये भी डिपेंड करता है कि आपके लैपटॉप का मॉडल कैसा है. सारे में वो भी नहीं, सिर्फ रैम के ही 2 स्लॉट मिलेंगे. आएंगे हम लोग मदरबोर्ड को जब डिस्कस करेंगे ना तो उधर दिखेगा ये चीज. सर ओके सर. यस सर क्वेश्चन है वह उसको व्हाट इज ए पैरेलल पोर्ट. actually parallel port, look here, this is a parallel port. Its color is almost pink, and this parallel port was used not in these days but was used to connect printers, dot matrix printer. It has 25 pins. That's why it is also known as DB25. Saurabh, Sir, your point. Sir, Yes. is a connected printer. It is used to connect a printer. Okay, sir. Okay. Non-impact printer के simple printer. Impact printer. Impact printer. Okay, sir. A dot matrix is an impact रेलवे में printer. टिकट कटना नहीं वाला. Yes. sir what was the second tip sir? Parallel port is also known as Parallel port is also known as LPT port, DB25 port. okay. Yes, sir. Okay. Okay, sir. But now in these days you can't see this type of port. Actually I have chosen this picture. मैंने इस पिक्चर को इसलिए चूज किया बिकॉज होता है ना कि आप कोई मशीन देखते हैं और वहां पे आपको अभी ऐसा मशीन, ऐसा नहीं है कि ये सारी मशीनें मार्केट से गायब हो गई. जिनके पास पुरानी पीसी है दे आर यूजिंग दैट पीसी. और इन केस ही और शी विल आस्क अ क्वेश्चन कि व्हाट इज दिस यार, आई एम नॉट यूजिंग इट. इन दैट केस यू विल नॉट बी आंसरेबल, ये है क्या. और ज्यादा पुराने मैं नहीं गया बट उतने तक के पिक्चर को आपके सामने रखा हूं जिससे कि करेंट एंड जस्ट 5-10 ईयर्स बैक के जितनी भी पीसीज हैं उनको आप देखें. उससे पुराने वाली पीसी तो बट ऑब्वियस है किसी के पास शायद ही कोई होगा जो अभी भी यूज कर रहा होगा. सर ये जो पिंक वाला जो है पैरेलल पोर्ट में ये 9 इसमें पिन होता है क्या? नहीं 9, व्हाट आई एम टेलिंग 25 पिन पिंक वाला. इधर मेरा जो माउस का पॉइंटर है 25 पिन होते हैं. ओके सर. ओके 9 पिन, 15 पिन, 25 पिन. 9 पिन सर बीसीए पोर्ट में होता है ना. 9 पिन बीसीए पोर्ट नहीं, सीरियल 15 पोर्ट. पोर्ट में 9 सीरियल BCA में 15 कॉम पोर्ट पोर्ट में होता होता है. है. कम पोर्ट में पोर्ट होता में है होता है 9 डीबी 9. ठीक है. 15 VGA. Yes. And at USB port 1 pin. no no Two pins. pins. 2 pin. no 4 pin. 4 pin. Yes, sir. Vishnu 4 is just pin. guessing. Okay, fine. 1 2. Okay sir, 4. Just double 1 का double 2, 2 का double 4. Finally सर इसमें 4 पिन होता है सर. पीतल कॉपर कलर का सर होता है 4 को. हाँ होता ही कॉपर ही होता है. एंड ये जो this flat USB port has 4 pins at single side, and जो स्क्वायर शेप में होते हैं उसमें 2 टॉप में and 2 बॉटम. This kind of USB port you can see at the printer. Okay, this is a very common thing which we should know. हमें जानना चाहिए, है ना? Yes, sir. Okay, fine. And at the bottom there is a
56 kbps RJ11 modem port. This is the modem port. Actually, yes, इंटरनेट कनेक्टर डिवाइस है मॉडम. yes, yes. Ports. Ports. Yes, sir. Ports means port. P spelling PORTS. PORTS, हाँ sir. Ports, sir. Port. Port ही मान के चलिए सर. Port क्या होता है सर? Port क्या होता है? All these are ports, my dear friend. A port is just a point by which. Listen. I'm answering. Vishnu, I'm answering. I have few knowledge. ठीक है, बहुत नहीं जानता हूँ, थोड़ा ही जानता हूँ, लेकिन बोलने का तो दोगे ना राइट मुझे कि वो भी छीन लोगे. Yes. Port is just a point by which we can connect a device. So all these are ports: PS2 port, VGA port, serial port, COM port, LPT port, LAN port, USB port. Fine. Sir, I have a question, sir. Yes. Sir, why do we need so many kinds of ports, sir? Why do we don't make one common port to use everything? Look, my dear friend. If only one port is available, how will you connect different component of a computer? Can you connect your keyboard, mouse, printers, etc., all these things with a single port? Yes. No, sir. No, sir. No, sir. Single. Even at our phone also, there are many ports. To charge phone, separate port. To connect headphones, separate port. ऐसा नहीं हो all सकता कि depends- सारा पोर्ट को अगर रहे अनुसार, मतलब जितना पोर्ट है उसको डिजाइन सिर्फ अलग अलग क्यों होता है? जो क्योंकि- ये सब पोर्ट है, जो उसका डिजाइन और जो उसका यूज के डिपेंड के अनुसार वो सबका अलग अलग शेप साइज क्यों होता है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? के जगह वहाँ पे हेडफोन का यूज करेगा मतलब लगा के. Listen, my dear friend. Yet these two questions you are asking is I'm not satisfied with your question. You all know that. Have you seen the early days motorcycle and cars? आपने पहले के मोटरसाइकिल और कार देखे हैं? Yes, sir. आज के भी मोटरसाइकिल और कार देख रहे हैं? यस सर. डे बाय डे चेंजेस होते जा रहे हैं. Yes, sir. और बहुत जल्द आप देखेंगे कि आपके पास ना तो लैपटॉप होगा ना डेस्कटॉप, आपके पास में एक वर्चुअल स्क्रीन होगा सर. Yes, sir. फिर ये सारे झंझट ही खत्म हो जाएंगे. Yes. Yes. Day by day change the ठीक है. advantage. तो फिलहाल के लिए जो एट प्रेजेंट जिस तरीके की डिवाइस हमारे पास है, वी शुड नो अबाउट इट. फ्यूचर में सर सारे लोग Fine. We should know about it. At least, listen, there is no matter to laugh. It all depends on the devices, which type of devices we are able to buy. Even now in these days, touch screen laptops are also available. There is no need to use keyboard. Just click on the screen and all will be done. But is it possible for everybody to buy that kind of laptop? No, sir. No. Technologies are here, and day by day technologies are grooming, and you can have that kind of capability also, that you can develop that kind of device. If you need more development, more advanced technologies, devices, so you can try also.
which type of changes we should do with the device by which we can get this kind of facility, which I want or which public want and which is required in the market. We are discussing about all those things which are available in the market right now. Fine. Yes, sir. Yes, sir. Sir, what is BCA port? What is BCA port? Have you attended my last class? No, sir. Why have you not attended my last class? At least you have seen my video. No, sir. You should see it because I am uploading video every day. Okay. If anybody missed his class due to some reason, any reason, network issue, some family problem or anything, yes, you can see my lecture and by watching videos, because every day your class video is uploaded just after the class. Okay, so that will be comfortable. Still, for this time, VGA port is used to connect output display units like monitor, Projector and projector. Projector. Fine. yes, sir. Okay. Now, finally, we were discussing about the 56 kbps RJ11 modem. First thing, modem. Modem was used for connection with internet. Yes, sir. Internet connectivity. Now we have different kind of facility to connect our PC with the internet. We can connect it just with a LAN port. We can connect internet with our PC just by enabling hotspot on our phone. Yes, sir. Using Yes, sir. Wi-Fi LAN card. But in early days, a modem was used. It has RJ11. Just see, there is a RJ45, Yes, sir. Yes, sir. RJ45, and this is RJ11. There is a difference. In RJ45, there are 8 pins. RJ45 में 8 pin होते थे. But in RJ11, there are only 4 pins. 4 pins. Yes, sir. Okay? You can see this kind of pins now in these days also. आज भी आप देख सकते हैं. Have you seen वो landline phone set? Hello, receiver उठा के hello. देखा है आपने? Yes, sir. Yes, Yes, sir. So at that telephone set, you can see RJ11 connector. At the end of the just circle wire, वो जो loop जैसा wire होता है जो expand होता है. Yes, sir. Yes. तो उस सेट एंड उस रिसीवर के दोनों के बीच में जो कनेक्टिविटी होती है जिस केबल के हेल्प से, उस केबल के दोनों एंड पे RJ11 कनेक्टर लगा होता है. yes, sir. अब जब कभी भी उस फोन को देखना, एक बार उस पर गौर करना, यू विल फाइंड दैट काइंड ऑफ कनेक्टर एट द पोर्ट एट द टेलीफोन सेट, एंड व्हेन यू विल रिमूव दैट केबल by pressing a clip, वहां पे एक क्लिप होता है इस तरीके का, प्लास्टिक का सर, कड़ा करता है. उसको क्लिप को प्रेस करके थोड़ा सा बाहर निकाल लेना. जब बाहर निकालोगे तो अंदर RJ11 पोर्ट दिखाई देगा. At that RJ11 port, when you will count number of pins, you will get there are 4 pins. कि वहां पे 4 पिन. फाइन. चलो, ये तो अभी क्या है, मतलब मैं आपको ऐसी बातें बता देता हूं जिससे कि आपको कभी अगर मौका मिले तो आप देख सके कि एक क्लास में हमने ये समझा था तो वो इधर है. तो उससे क्या होता है ना कि चीजें बिल्कुल माइंड में फिट बैठती हैं. करेक्ट? Yes. Still, BSNL is providing this kind of things. Still, when you will take a connection of BSNL for landline, with that landline, Vishnu, with Yes, sir. that landline, you will get a splitter. You will get a splitter, a very small device.
a plastic box. From that splitter, you will get two lines, two cables. One will be connected to the modem, to the router, and another will be connected to the phone. Fine. At that splitter, you will again get a RJ11 port and the cable at which you will get RJ11 connector. Okay. सर Yes. सर यहाँ पे 100 MB पर सेकेंड और 56 KB पर सेकेंड उसका मैक्सिमम स्पीड दिया हुआ है. हाँ, बट अब ये चेंज हो गया, ये काफी हाई स्पीड में चलता है. ठीक है. Now you all can connect different components of your computer, external component. I'm not talking about the internal component. External component like keyboard, mouse, printer, a monitor, with the PC, sound box or speaker. आप ये सब connect कर सकते हैं? Yes sir. Yes, sir. Okay, fine. But in next class, we will कितने लोग कर सकते हैं? Please raise your hand. I'm just stopping myself. Yes sir. Repeat again, sir. नहीं. कितने लोग कर सकते हैं इसको? Please raise your hand. क्या कर सकते हैं कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स अगर मैं आपको दे दूं तो उनको आप कनेक्ट करके कंप्यूटर ऑन कर लेंगे? Yes sir. Try, sir. I want to try. Try, yes sir, I want to try. Okay, try. It is around 20 people, 16 have raised their hand, and I think 20 people can do it. But there are 59 students. So 40 students are, I think, not able to do it. 40 or 35 students. So for the confirmation of connectivity, we will see a video in next class. Okay, how we can connect different components of our computer with the CPU cabinet, and finally how we can switch on our computer. Okay. Yes sir. Okay sir. Okay sir. So just give me 1 minute. I'm just going to manage your live streaming. Sir, एक क्वेश्चन था. Just give me 1 minute. 1 minute. Yes,